नमस्कार, मैं अशोक व्यास विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मंगलवार को ITV गोल्ड पर जब आपसे मुलाकात हो रही है तो आज के इस विशेष अंक में हम आपको लिए चलेंगे भारत में राष्ट्रपति भवन, जहां पद्म अवार्ड प्रदान किए गए। वहाँ की कुछ झलक आप तक पहुँचाने के अलावा आज के कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे दो युवा संगीतज्ञों से जो भारत से बाहर रहकर भी कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं और आदित्य प्रकाश और सुषमा सोम के नए एल्बम होम के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। आज के विजन ऑफ एशिया में आप देखेंगे एक खास रिपोर्ट वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क में मनाई गई होली से, और साथ ही आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए मातृभूमि अखबार के शताब्दी समारोह में। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा। इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहें हमारे साथ। फिर एक बार स्वागत है आपका विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में। हम प्रारंभ करते हैं आज के कार्यक्रम का उन झलकियों से जहां आप पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन, जहां पद्म अवार्ड प्रदान किए गए। और उन नामों से तो आप परिचित हैं, पर इस भव्य आयोजन के साक्षी बनते हुए जहां आप पद्म अवार्डीज को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ग्रहण करते हुए देखते हैं, साथ ही यह भी देखते बनता है कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति और संस्कृति से ओतप्रोत संस्कारों में एक दूसरे को सम्मान देने का जो एक भाव रहता है वो भी भारत के प्रधानमंत्री और कुछ पद्म अवार्डियों के बीच में देखने को मिला, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है। प्रस्तुत है कुछ झलकियां पद्म अवार्ड वितरण समारोह की। श्री राधेश्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा, उनके पुत्र श्री कृष्ण कुमार खेमका। जनरल बिपिन रावत PVSM, UVSM, AVSM, USM, SM, VSM मरणोपरांत सिविल सेवा, उनकी पुत्रियां श्रीमती कृतिका रावत और सुश्री तारिणी रावत।
स्वामी शिवानंद, योग। विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम में हम अब आपको लिए चलते हैं उन रंग रंगीली लेकिन साथ ही साथ दिव्य भाव से भरी हुई झांकियों की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, वल्लभ कुल में भगवान को रंग गुलाल अर्पित करने की जो परंपरा है, उसका निर्वहन यहाँ भी उन मंदिरों में जो भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ जी के मंदिर हैं, जिन्हें कि भक्त हवेली कहकर इसलिए संबोधित करते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के घर के रूप में लिया जाता है। और धीरे धीरे भारत से दूर रहकर भारतीय उत्सवों को जागृत रखने के क्रम में होली मंगलाने, यानी जिस दिन होली खेली जाती है उसके एक दिन पूर्व जिस तरह से होली जलाई जाती है, वो क्रम भी वैष्णव मंदिर में प्रारंभ हो गया है। तो आप देखेंगे कुछ झलकियाँ होली मंगलाए जाने की, जिसका संबंध भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप की बहिन होलिका के प्रसंग के साथ साथ ये बात हम तक पहुंचाता है कि किस प्रकार भक्त अपने भगवान के स्मरण से सुरक्षा प्राप्त करते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। प्रस्तुत है वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क से होली के उत्सव की ये मधुर झलकियाँ। जब तक हमें अंदर आ जाए ऐसे ये जोड़ी बढ़ाई आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, होली है रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज न्यूयॉर्क में होली रे रसिया, आज होली रे रसिया, होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया।
आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं दो युवा संगीतकारों से और ये दोनों अपने गुरु के निर्देश में संगीत की शिक्षा को जारी रखते हुए चेन्नई पहुंचे हैं। एक पहुंचे हैं लॉस एंजल्स से आदित्य प्रकाश और सिंगापुर से पहुंची हैं सुषमा सोमा। अपने गुरु के साथ जब सीखते हुए दोनों एक दूसरे से मिले, संगीत के बारे में जो उनके बीच में एक समझ विकसित हुई उसको लेकर प्रकृति को विशेष रूप से केंद्र बनाकर एक एल्बम सुषमा ने कंसीव किया जिसका नाम है होम। इन दोनों युवा संगीतकारों से हमने ऑनलाइन बातचीत की। प्रस्तुत है उस बातचीत का ये अंश। Music, as you mentioned, and remember your grandmother also. So there is one way where any musical instrument draws you towards itself, and sometimes you want to be a singer of some kind who is somewhere in your subconscious that I want to be able to sing like that. So from that point of view, music for you as well as how Carnatic classical music, which is not very easy for a layman sitting in Singapore, and your journey, as earlier you mentioned, through training while you were exposed, the way you perceive music also have undergone some change. Talk to us about that. I think, I mean, like you rightly pointed out, growing up in Singapore and then practicing Carnatic music, I think, you know, during those years, a huge part of me was very desperate to have others understand the form. So when I would sing, you know, it was very important to me that my Chinese friends or, you know, even my Indian friends who were not initiated to Carnatic music, I really wanted them to understand the form. And so I would think about what would they like? What would they want to hear? How can I make the music easy for them? You know, and I feel like all of those. So me doing music, it really, and the way I would perform publicly, a lot of it depended on how I thought they would perceive it. And I think that is one of the most important changes that's actually gone through in the last 5 years, you know, with my mentor, R.K. Sriram Kumar. And I'm also very inspired by T.M. Krishna, who is you know, such a brilliant musician and scholar, and my friends Maitri Prakash and also Aditya there, where, you know, like learning from them, talking and everything, I realized that, you know, in order for others to really follow you on your journey with music or anything that you do, you have to have the conviction in it first. Like, I have to believe in the form. I have to believe in the power of the form. And I have to love it so much so that when others are listening to me, that love is just so infectious. That journey becomes, you know, like something that everyone wants to come on, you know. And I think that's one of the biggest changes that's happened over the last 5 years. And that's because of the way I think my mentor, just seeing the way he handles the music, the way he loves it himself, and the way he plays with it. And, you know, like just, it's just, the world is an oyster to him because everything he sees is just through music and the way he plays with it. I realized that, oh my God, I want to be able to achieve that. And the only way I can do it is to fall madly in love with the form that way, you know? So when you are in love with somebody, even in person, it is very difficult to explain to another being that what is it about this boy or this girl which kind of makes you think about him or her all the time. This becomes even more difficult to let people perceive the kind of love that you have. But we are enriched by people who discover it, who share it through their own creative expression. So, and talking to you both tells me that there is so much that we can learn from you. But looking at the limited time that we will have, I want to share the good news that a new album created by Sushma and Aditya
is there for us to taste and to enrich and nourish ourselves with music which relates to soul and nature together in a very special manner. So, Aditya, you both have collaborated for this album referred to as Home. Talk to me about how the idea first was floated by Sushma and in what way you creatively collaborated to come up with the tracks that we have in the album. Well, Home has been Sushma's brainchild for quite a while. I've, over the last 5 years, she's been getting very passionate about environmental causes. And music is obviously a big part of her journey. And on her last album, I was a part of the kind of arrangement process, the behind the scenes. And on this album, she said, I want you to be a part of this. I want you to produce this album for me. And I'd never produced even my own album. I'd never produced myself. I just started working on it. So I felt this is a big responsibility. How can if I can't even do it for myself, how can I do it for somebody else? And I remember I told her, Sushma, like, I'll try my best, but no promises. But I think she had more faith in me than I had in myself. And she really trusted my vision musically, and I think all of our conversations and us being best friends was a big part of it. And we learned from the same mentors, as she mentioned. So we're kind of in the same way of thinking, the same mode of thinking. And I think this was a big part of what made our combination fit so well. और अब चलते चलते आपको लिए चलते हैं एक महत्वपूर्ण अखबार के शताब्दी समारोह में और वहाँ पर यानी मातृभूमि एक महत्वपूर्ण अखबार है जिसका भारत के स्वाधीनता इतिहास के साथ भी संबंध है और किस तरह से मातृभूमि 100 वर्षों तक लगातार पाठकों तक खबरें पहुँचाने में सफल रहा है। क्या नीतियाँ, क्या दर्शन, क्या प्रभाव मातृभूमि का है, इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का ये अंश प्रस्तुत है। If we look back at our history, several grades have been associated with some or the other paper. Lokmanya Tilak nurtured Keshri and Maratha. Gopal Krishna Gokhale ji was associated with Hitwad. Prabuddha Bharat was associated with Swami Vivekananda. When we remember Mahatma Gandhi, we also remember his works in Young India, Navjivan and Harijan. Shyamji Krishna Verma edited The Indian Sociologist. I've just given a few examples. The list is endless. Friends, if Matrubhumi was born during India's freedom movement, the centenary celebrations are taking place when India is making Azadi Ka Amrit Mahotsav. We did not have the opportunity to sacrifice our lives during the freedom struggle or for Swaraj. However, this Amrit Kal gives us the opportunity to work towards a strong, developed and inclusive India. For any nation to develop, making good policy is one aspect, but to enable the policies to succeed and to ensure that large-scale transformation take place, active participation from all walks of society is needed. For that, the media plays a critical role. In these years gone by, I've seen
the positive impact the media can play. The example of the Swachh Bharat mission is well known. Every media house took up this mission with great sincerity. Likewise, the media has played a very encouraging role in popularizing yoga, fitness, and Beti Bachao, Beti Padhao. These are subjects beyond the domain of politics and political parties. They are about making a better nation in the coming years. In addition to this, there is more that can be done keeping in mind Azadi Ka Amrit Mahotsav. और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको फिर याद दिलाना चाहेंगे कि आप हमारे मित्र बने फेसबुक पेज पर सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को और लिखने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर अपने सुझाव और वो इवेंट्स जिनके बारे में आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं सूचना। अपना ख्याल रखें। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।